Good morning, student of class 3. I am a computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to start revise from chapter number 1, computer system and hardware and software. Okay, chapter number 1, computer system, hardware and software. As all of you know that the first term exam is coming soon and the exam is mainly based on MCQ. So all of you have to read the chapter very carefully, each and every line of a chapter, each and every chapter very carefully. Okay, so that's why I want to start revise from the first chapter. Okay, so let's start. Here you can see that these 4 chapters which are included in the first term examination, we have already completed our 4 chapters. Today I am going to start revise from chapter number 1, computer system and hardware and software. Okay, here you can see a computer system. We all know that computer system means all the parts of a computer when work together, it is called to perform a certain task, uh, uh, they are called computer system. That means जो computer का computer has different types of parts. Okay, computer has different types of parts. All parts work together to perform a certain task. Okay, or perform a specific task. दे आर कलेक्टिवली कॉल द कंप्यूटर सिस्टम. दैट मीन्स जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स को लेकर क्रिएट किया गया है. लाइक सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, यूपीएस हो गया, एसएमपीएस हो गया. ओके, so there are different types of parts are there in a computer. So first is input devices are which are keyboard, mouse and joysticks. Storage device, hard disk, pen drive, cd, memory card. Output device, monitor, printer and speaker. And software, system software and application software. When all parts are work together to complete a specific task, we call this a computer system. Okay, that means जहाँ पे हम लोग कीबोर्ड से इनपुट करेंगे. ओके, वो प्रोसेस होगा, कोई डेटा अगर प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा, सीपीयू में होगा. उसके बाद वो रिजल्ट कहाँ पे दिखेगा, आउटपुट डिवाइस में दिखेगा. और वो ये सब सारा काम कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही होगा. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज़ IPO cycle. IPO cycle means IPO stands for input, process and output. Okay, input, process and output. Input means when we want to give some instruction to the computer, this is called input. That means हम लोग जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इनपुट. ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस. The computer will process the input data. Okay, that when we input some instruction to the computer, then computer will process the input data. ओके, दैट मीन्स जो हम लोग इनपुट करते हैं कंप्यूटर में उसको क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग बोलेंगे. नेक्स्ट इज आउटपुट. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा कंप्यूटर विल जनरेट ए डिज़ायर रिजल्ट. ओके, कंप्यूटर विल जनरेट ए डिज़ायर रिजल्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे. ओके, व्हेन ए कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग, व्हेन ए कंप्यूटर generate a desired result, we call this is output. Okay, next is output cycle. The entire process of input, process and output is called output IPO cycle. Okay, entire process, that means input, output, process and output, the entire process is called IPO cycle. Next is hardware. Okay, hardware means is a part of a computer. Hardware means is a part of a computer that a person can touch or see. ओके, टच और सी, दैट मीन्स हम लोग जिस पार्ट को हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा. दिस आर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर. फर्स्ट इज माइक्रोफोन. Microphone is the input device. We all know that we use the microphone to input our voice into the computer. Okay, and it is used to communicate with the people through a computer connected on the internet connection. It can also be used to record a person voice on different sound in the different computer. That means हम लोग माइक्रोफोन किस लिए यूज़ करते हैं, एक इनपुट डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं. क्या होता है उससे, वी कैन ईजिली record our sound and different types of sound in a computer. हम लोग किसी भी साउंड को हम लोग कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं और हम लोग इससे आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू पीपल वाया इंटरनेट. ओके, दैट मीन्स हम लोग कहीं पे भी बैठ के कोई भी पीपल से हम लोग बात कर सकते हैं बाय यूजिंग दी माइक्रोफोन. ओके, नेक्स्ट इज़ वेब कैमरा.
It is a video camera, it also called webcam. Okay, it is connected to a computer and display picture or videos on the monitor screen. That means web camera कैमरे की तरह ही काम करता है. जब हम लोग ये क्या करता है कि इनपुट करता है, जो हम लोग का इमेज है वो कंप्यूटर में इनपुट करता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक वीडियोज़ कॉल टू पीपल एट द डिस्टेंस प्लेस. दैट मीन्स हम लोग जहाँ अगर हम लोगों को कोई भी दूसरे जगह रहने के कोई हम लोगों का दोस्त रहता है, कोई रिलेटिव्स रहता है, हम लोगों को वहाँ से बात करना है वीडियो कॉल के ज़रिए, तो ये बहुत ही काम में आता है. ओके, यू यूज़ द वेब कैम टू communicate each and every people around the world via video calling. Next is plotter. Plotter means plotter is similar to the printer. Okay, plotter is a type of printer that is used to print on a very large size paper. That means very large size paper. Okay, it functions slower than a normal printer and is mostly used on flex printing ऑफ बैनर. दैट मीन्स जो बैनर हम लोग देखते हैं वो कहाँ से प्रिंट होता है, वो प्लॉटर से प्रिंट होता है. ओके, next is light pen. It is come with the special pad. It is connected to a computer and display whatever you write on a pad on the monitor screen. That means हम लोग लाइट पेन क्यों यूज़ होता है. लाइट पेन हम लोग अगर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लिखना हो, हम तो कंप्यूटर के स्क्रीन में कुछ नहीं लिख सकते, वो तब जाके वो लाइट पेन यूज़ होता है. हम लोग लाइट पेन में जो पैड होता है वहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो कंप्यूटर में शो होगा, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर शो होगा. ओके, सो दीज आर द मेन फ्यू हार्डवेयर discussed in the chapter. Next is software. Software means include all the program inside a computer that makes its hardware run. You cannot touch or see this program. You have to work on MS Pen, which is a software. That means हम लोग जब भी कोई काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही करते हैं. ओके, और हम लोग इसको छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते. सॉफ्टवेयर इज़ a set of instruction to perform any specific task on a computer. That means सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया है कोई भी स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए into the computer. ओके, एन एग्जाम्पल इज MS Paint इज़ ए सॉफ्टवेयर मेनली ड्राइंग के लिए यूज़ होता है. एग्जाम्पल ऑफ अदर सॉफ्टवेयर आर विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोगोज, MS Word एंड द गेम्स यू प्ले ऑन द कंप्यूटर. सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर्स. Next is how does a computer complete a task? A computer follow main 3 steps to complete any task. Input, process and output. In this video I already have discussed about this input, process and output, which is called IPO cycle. Okay, next is inside the CPU box. Okay, central processing units. The central processing unit is a microprocessor chip. Okay, we all know that the central processing unit has a microprocessor chip placed inside the CPU box in a computer system. The calculation and process is done inside the CPU box. The CPU divided into 3 parts: arithmetic, logical unit, control unit and memory unit. Okay, so basically हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी कुछ प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, CPU के अंदर होता है. CPU में क्या होता है, प्रोसेसर होता है. ओके, प्रोसेसर इज़ a small silicon chip. Okay, and the CPU is divided by 3 parts. Main is arithmetic parts, first is arithmetic parts, next is control unit and last is memory unit. So when यहाँ पे आप लोग एक चार्ट देख रहे हैं, here you can see a chart. First of all we need to give some instruction to the कंप्यूटर. ओके, भाया इनपुट डिवाइस. हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, किससे, इनपुट डिवाइस से. वो कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल यूनिट में जाएगा. ओके, द इंस्ट्रक्शन गो टू द कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा उसको कहाँ से कहाँ पे भेजना है, मेमोरी यूनिट में भेजना है कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में भेजना है. ओके, so first of all arithmetic logical unit mainly calculation or mathematical calculation. Okay, that means arithmetical logical unit mainly perform the calculation, mathematical calculation. Control unit controls the flow of instruction. कौन सा इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसको कंट्रोल करता है. ओके, और मेमोरी यूनिट क्या होता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को. ओके, मेमोरी यूनिट स्टोर द इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट जब ये प्रोसेस हो जाएगा, पूरा जो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक रिजल्ट विल बी क्रिएटेड. देन इट विल शोन ऑन द आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया. ओके, सो दीज आर द मेन parts of CPU. Next is here you can see arithmetic logical unit does all the calculation and compression.
Next is control unit, controls all the flow of instruction, and memory unit temporarily store the information. Okay, and whereas you give the instruction and input device, it reach the central unit. That means जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कहाँ पे जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, सीपीयू में जाता है. देन कंट्रोल यूनिट इनसाइड द सीपीयू कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द अदर यूनिट्स. दैट मीन्स जो कंट्रोल यूनिट है वो मैंने पहले ही बोला कि कंट्रोल यूनिट ठीक करता है कहाँ पे भेजना है. ओके, the control unit sends the data for calculations such as multiplication, division, arithmetical logical unit. That means जो भी कैलकुलेशन होगा वो कहाँ पे भेजेगा, ALU को भेजेगा, arithmetical logical unit पे भेजेगा. and the result is calculated and stored temporarily in the memory unit. जो जब result create हो जाएगा तो वहाँ पे कहाँ पे भेजेगा, memory unit पे भेजेगा. Okay, each time of any instruction provided by the processed is control unit, it fetches the data from the memory unit, decodes it, and again direct the suitable units for the further processing. The final result will be displayed on the output device. Okay, so these are the main basic process a computer will done in the CPU box. Okay, next is, let's revise. IPO stands for IPO, input, process and output. Okay, input is the first steps for IPO cycle. Input means give instruction to a computer for a particular task. I have already discussed in this video. The process means process instruction to the get a meaningful result. That means कोई भी meaningful result create करने के लिए हम लोग process करते हैं, data को process करते हैं, computer process करता है. Okay, next is output is the final steps to be in output cycle. Next is, it is the result we get after the processing the data is or instruction provided by the computer. Next is, computer is a collection of hardware device and software program to complete a certain task. We all know that computer has two parts, hardware parts and software parts. Okay, the hardware include the input device, output device and storage device. Software has two parts, application software and system software. Hardware is a part that it can be touch and see. That means हम लोग कोई हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को हम लोग टच भी नहीं कर सकते, बट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट मेक्स द हार्डवेयर रन. ओके, द प्रोग्राम प्रोसेसिंग इज इंस्ट्रक्शन टू गिवन अ कंप्यूटर परफॉर्म इन द इनसाइड सीपीयू. दैट मीन्स जो भी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं वो कहाँ पे होता है, सीपीयू के अंदर होता है. सीपीयू कौन कितना भाग है, दे आर थ्री. सीपीयू हैज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, control unit and memory unit. Arithmetical logical unit calculate all the mathematical calculation. CPU means control the flows of instruction, and memory unit means temporarily stored the information. Okay, so move on to the question answer section. Here you can see the 5 pictures are there. First is monitor, which is an output device. Next is mouse, input device. Next is keyboard, keyboard is an input device. Next is speaker, speaker is the output device, and last is microphone is also an input device. Next is complete the following full forms. First is control unit. Okay, control unit. Next is memory unit. ALU means arithmetical logical unit. Okay, next is IPO means input, process and output. Last is central processing unit. Okay, next is fill in the blanks. Okay, first is software included. Okay, software included are the programs inside a computer makes the hardware run. Okay, next is output is the result we get from the processing of the instruction provided to a computer. Next is CPU is divided into three main parts: arithmetical logical unit, control unit and memory unit. Next is arithmetical does all the compression and calculation inside the CPU of the computer. Next is Neha uses a webcam to video call her aunt who stays in United States of America. I have already provided this question answer in YouTube. And next is true false. Okay, first is ALU controls flow of instruction, this statement is false. Next is MS Paint is a hardware, this statement is also false. Light pen used directly to write on a computer screen, this statement is also false. Okay, next statement is storage device is a part of a hardware device, this statement is true. CPU is a device that where the all processing is done, this statement is also true. Okay, next is here you can see a diagram. First of all, we need to input some instruction via input devices, then control unit, then arithmetical logical unit and the memory unit, the three parts of a CPU. Next is output device. Okay,
Next is question answer section. What does IPO stands for? IPO stands for input, process and output. Next is, what are the two types of software? Give one example of each. We all know that the two types of software is application software and system software. System software Windows and application software MS Paint. Which is a what is the uses of microphone? That microphone is used to communicate with the people through a computer connected with the internet. It is also can use to record a person voice different sound in a computer. Next is, name the device that works as a printer. How it differs from a normal printer? Plotter is the device that works as a printer. It functions slower than a normal printer, mostly used in the flex printing for banners, and plotter is used to print on very large size of the paper. Okay, so these are the mainly exercise question answer from this chapter. I have already provided it. Now I provide this question answer once again. You can easily download this question answer. Go to the YouTube description and click the link. When you click the link, the PDF will automatically download on your phone. Okay, so I am ending my discussion here. I will continue revising from chapter number 2 in my next video. So I hope that all of you understand today's topic, and please read the chapter very carefully. Okay, read the chapter very carefully, and in my next video I start revise second chapter. Okay, so till then, take care, goodbye and thank you.